All right, starting off with Tamil Nadu's expelled DMK leader, Jaffer Sadiq, who's been held by the NCB, the Narcotics Control Bureau, as it probes allegations of narcotics or drug smuggling by Jaffer Sadiq. He now claims that he is being probed by the ED for money laundering as well. He asks, in fact, the NCB rather, pushing for the Enforcement Directorate to probe money laundering charges, as they claim or suspect that he could have been giving DMK netas, including Udhayanidhi Stalin, money. NCB may call Udhayanidhi Stalin as well for questioning. Now, this is only getting murkier with Jaffer Sadiq, who's been a close associate of several DMK netas. He is a DMK member as well. We believe that at this point, the NCB also pushing for ED investigation into the case of money laundering, suspecting that he could have pushed a lot of money to the DMK. Let me cut across to Arvind Oja for more on that. Arvind, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये उनको मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशन भी अभी रेज हुआ है. इसके बारे में कुछ बताइए. क्या जाफर सादिक उदयनिधि स्टालिन को पैसे दे रहा था? देखिए, सबसे पहले बताऊं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने जो जफर सादिक है उसको आज गिरफ्तार किया है. इसके तकरीबन 7 दिन पहले एनसीबी ने एक बहुत बड़ा मॉड्यूल बस्ट किया था, जिसके तार ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए थे. न्यूजीलैंड पुलिस ने जब एनसीबी को ये जानकारी दी थी, उसके बाद ये पूरा ड्रग्स बस्ट केस हुआ. अब जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिली है इंडिया टुडे को, उसके मुताबिक जफर ने इंटरोगेशन में ये बताया है कि उसने उदयनिधि स्टालिन को 7 लाख रुपए दिए थे, नंबर 1. नंबर 2, 5 लाख रुपए जब वहां पर बाढ़ आई थी उसके रिलीफ फंड में दिए थे. 2 लाख रुपए पार्टी फंड में दिए थे. अब ये पैसे किस मकसद से दिए थे? क्या ड्रग्स से जो पैसा कमाया था जफर सादिक ने, वो पैसे दिए थे स्टालिन को? इन तमाम चीजों की जांच एनसीबी की टीम कर रही है. चूंकि 2000 करोड़ से ज्यादा का ये ड्रग्स सिंडिकेट है, इस वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी एक लेटर लिखने वाली है. बहुत मुमकिन है कि आज शाम तक जो एनसीबी की टीम है वो ईडी को लेटर लिखे और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच है वो करने को कहे. उसके अलावा एनसीबी के सोर्सेज ने यह भी बताया है कि उदयनिधि स्टालिन को बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सम्मन करके पूछताछ के लिए बुलाए. तो एक बड़ा रिविलेशन जो जफर सादिक है उसने एनसीबी की पूछताछ में एनसीबी के सामने डिस्क्लोज किया है. तो ये सोर्सेज से हमें जो जानकारी मिली है, अब जो पैसे दिए, क्या वो ड्रग्स से कमाए हुए पैसे थे, पैसे किस मकसद से दिए, ये सब चीजें जांच का सब्जेक्ट है. इन्वेस्टिगेशन होगी आगे. अरविंद हमारे साथ जुड़े रहिए. I'm going to quickly cut across to NCB Chief ज्ञानेश्वर दत्ती. ज्ञानेश्वर सिंह जी, आप हमारे साथ, if you can hear me, if you can give me some details about Jaffer Sadiq, allegations of money laundering that's now surfaced on him, linking him giving money to the DMK party functionaries, particularly CM son Udhayanidhi Stalin. Would you be able to tell us a little more on what the NCB has found when it comes to drug links with this man, Jaffer Sadiq? You know, we at NCB, along with Delhi Police, we busted this network, which was supplying pseudoephedrine to New Zealand and Australia. And after the initial arrest of 3 persons on 15th of February, we came to know that Jaffer Sadiq happens to be the mastermind and kingpin behind all this operation from India. So today we were successful in arresting him. And as per his disclosure, he has minted a lot of money in this drug business. And he has been investing this ill-gotten money in film industry, hotels, real estate, hospitality, etc. And some funding is also come across. So we are investigating all this drug money trail. Sir, if you can tell us a little more on the links that that the NCB may have found with money laundering. We hear NCB has also now egged the Enforcement Directorate to jump in on a probe. Yeah, we will involve Enforcement Directorate as well as maybe we'll seek the help of other agencies. This is an excellent case of interagency cooperation. So a lot of agencies, including
intelligence agencies, and we have been working together. So in this probe, there is an angle of money laundering and having a cover business of film industry or things like that. So we will be taking help of ED, and soon we will bust the entire network and bring all the trails of ill-gotten money. Right. Mr. Gyaneshwar, a quick word, if you could break it down for us, the kind of modus operandi that he operated with Jaffer Sadiq. Jaffer Sadiq was exporting the pseudoephedrine to Australia and New Zealand under the cover of food articles like desiccated coconut or some food material from Delhi and from other places of India. So he has been running this business for a few years, and this whole gang has transported about 3,500 to 4,000 kgs of pseudoephedrine from India to Australia and New Zealand. My God. And how exactly did the NCP bust him? We got a tip from New Zealand and Australian authority that there is an increase of pseudoephedrine trade between these two countries, and it is coming illegally. In fact, they found traces of pseudoephedrine in the desiccated coconut dumped in their area. From there, we got to know about linkages of companies, one of the companies floated by Mr. Sadiq. And we have been working on it for past 6 months, and we were successful in nabbing 3 persons along with 50 kgs of pseudoephedrine on 15th of Feb last. And from here, his name surfaced, and I'm hopeful that few more persons will be arrested in the near future who are associated with him. Right. So we have Arvind Oja, who's also very closely following this story. He's our crime chief. Wants to ask you a question. Arvind, go on. ज्ञानेश्वर जी, शुक्रिया इंडिया टुडे से बातचीत करने के लिए। ये जो जफर है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से ये इस ड्रग सिंडिकेट में आया, इसका रोल क्या है, इस पूरे ड्रग जो इंटरनेशनल सिंडिकेट आपने बस्ट किया है, इसमें जफर का रोल क्या है, इसके बारे में अगर आप बता पाएं। जफर पहले से ही अपराधी रहा है। 2021 में संभवतः, अगर मुझे डेट ठीक से याद है, तो ये कस्टम्स के भी सिमिलर केस में, एनडीपीएस केस में वांछित रहा है, और उसके पहले पायरेटेड टीवी के केस में भी इसका नाम आया था। ये रियल स्टेट बिजनेस के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कई सारी फिल्म प्रोडक्शन में ये शामिल है। ये इसका कवर बिजनेस है। एक्चुअली ये सूडोएफेड्रिन यहाँ से निर्यात करता रहा है, और जो दिल्ली में हमने पकड़े थे, इसके नीचे काम करने वाले लोग थे। इसका मेन काम सूडोएफेड्रिन को प्रोक्योर करना और कंपनीज खड़ी करके, एक शेल कंपनीज क्रिएट करके उनका नेटवर्क, और इसको ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजता रहा है। इस तरह का इसका रोल पाया जा रहा है। सर, मेरे 2 क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। नंबर 1, क्या इसके पॉलिटिकल कनेक्शन है? क्या इसने उदयनिधि मारिन जो उदयनिधि हैं उनको पैसा दिया? क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? और तमिल फिल्म में इसका क्या रोल रहा है? सर, ये 2 क्वेश्चन है। सर देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बिल्कुल निष्पक्ष अन्वेषण में विश्वास रखता है। अपराधी का कोई जाति, धर्म या पार्टी नहीं। हमारे लिए जो भी अपराधी एनडीपीएस एक्ट का उल्लंघन करता है, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। किसी के कोई भी पॉलिटिकल कनेक्शंस हो, वो हमारे अन्वेषण के आड़े नहीं आएंगे। इस बात का मैं भरोसा आपको दिलाना चाहूंगा। दूसरी रही बात फिल्म निर्माताओं से इसके संबंध, तो कुछ पार्टनर्स का नाम इसके आया है। फिल्म अभी जो इसने 3-4 प्रोड्यूस की हैं, उसमें से एक फिल्म में पूरा पैसा इसने लगाया है ड्रग मनी का। तो उन सब की जांच पड़ताल की जाएगी, और वित्तीय अन्वेषण हम लोग पूरी तत्परता से इसमें करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि उसमें और भी खुलासे हों। धन्यवाद। Very much. Gyaneshwar Singh, Deputy Director General, NCB, Narcotics Control Bureau. Thank you very much, Arvind Oja, for joining us on that. Well, as we see here, the NCB is now pushing for an ED probe into Jaffer Sadik, claiming that there could have been links now with the man, Jaffer Sadik, the accused here in this big drug bust, with the DMK senior leadership, as high as Udhayanidhi Stalin. Allegations are that he could have been giving money or pumping money to the party's senior leadership. Now, on what grounds? All of that, if the ED is going to take up this investigation, probes would actually reveal
those details. But here we see the NCB nabbing this former DMK functionary, Jaffer Sadiq. Investigation claims that he is a real massive drug lord. Those are the words that's being used, basically. An international drug lord, because he has links with Australia, with New Zealand, and the kind of smuggling network is far and wide, much beyond this country itself. Now, NCB is looking into detail where even money laundering charges have now surfaced. Sources reveal that the accused had admitted before the NCB that he did pay some money to the DMK functionaries. He says 7 lakhs. Is it only 7 lakhs? Could it be a lot more? In fact, the same Jaffer Sadiq is said to have funded several movies. One movie particularly, as per the Deputy General of the NCB just said that he has funded an entire film with the money that he's used through drug smuggling. Now, he says he wants the ED to probe, the NCB wanting the ED to probe this matter. BJP going all guns against the ruling party, DMK, stating that the president, the BJP president particularly Annamalai, is slamming MK Stalin on the Twitter platform for free flow of drugs in the state of Tamil Nadu, requesting NCB to curb this drug menace in Chennai. During the investigation, NCB has claimed that Jaffer is a kingpin in this India, Australia, New Zealand drug trafficking racket worth over 2,000 crores. Jaffer, Deputy Head of NRI Wing of Chennai West District, DMK, अपने आप को बताता है और जहां तक ड्रग मनी के ट्रेल की बात है, प्रारंभिक पूछताछ में इसने ड्रग मनी को फिल्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और कुछ लोगों की फंडिंग में भी बताया। इसने कुछ फिल्में बनाई हैं जिसमें से एक फिल्म मंगई में पूरा पैसा ड्रग मनी का लगा है। इसके कुछ एसोसिएट्स हैं। आगे आने वाले समय में हमारी पड़ताल जारी रहेगी। बॉलीवुड से भी लिंकेजेस आए हैं, वहां के प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स जो इसके टच में थे। ड्रग मनी का ट्रेल अगर उन तक पहुंचता है तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी।